Good morning, everyone. Myself, Monica Watts, and again we are going to start another session of the chapter that was fabric and fiber. So, the another fiber, animal fiber, that we will do or we will discuss about it, that is silk. The another fiber is silk. Earlier we have discussed about the fiber that was wool. Silk is a fiber which is obtained from silkworm. Which animal is required to get the silk? That is silkworm. And silkworm, it feed on mulberry leaves. Mulberry leaves जो शहतूत की पत्तियां होती हैं उनको बोलते हैं. So they feed on mulberry leaves. And rearing of silkworm. Rearing of silkworm means silkworm को अपने पास रखकर उसको अपने हिसाब से ग्रो कराना. मीन्स वो कब उसको ग्रो करना है और कब वो उसको कौन सी लीव्स खाने को देनी है, तो उसकी पूरी केयर करना. दैट इज रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म. फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, हम ये रियरिंग क्यों करेंगे? फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क is known as sericulture. So sericulture is a process of rearing of silkworm to obtain silk. What is sericulture? Sericulture is a process of rearing of silkworm for obtaining silk. Now for the rearing of silkworm, that means obviously it is a kind of process that how we can get the silk from the silkworm. So how can we obtain silk from silkworm? It is a process, and the first step of the process is rearing of silkworm. Basically for the rearing we have to discuss about the life cycle of the silkworm. For that, what we have to discuss? Life cycle of silkworm. So what happened in the life cycle of silkworm? There is a silk moth, and the female silk moth, it lays eggs. These eggs are stored at suitable temperature. देखिए rearing में यही डिफरेंस है. अपने हिसाब से सिल्कवॉर्म को वो सुटेबल टेम्परेचर शायद मिले या ना मिले, बट जब हम रेयरिंग करा रहे हैं देन वी हैव टू प्रोवाइड दैट सुटेबल टेम्परेचर. तो यहाँ कंडीशन हम प्रोवाइड कराते हैं. देन दीज एग्स विल हैच एंड दे प्रोड्यूस अ caterpillar like structure, and that caterpillar is known as silkworm. That is also known as larva. This larva is kept in a clean box to feed on fresh mulberry leaves. Means यहाँ हमें उसे क्या कराना है? फीडिंग करानी है. पहले तो सिल्कवॉर्म अपनी मर्जी से फीड करता है, वो किसी भी लीफ पे फीड कर सकता है, बट यही डिफरेंस रियरिंग का है कि यहाँ फीडिंग हमारी दी हुई लीव्स के थ्रू होगी. सो वी विल प्रोवाइड द फ्रेश लीव्स टू द सिल्कवॉर्म, एंड देन अ लिक्विड इज सिक्रीटेड बाय द लार्वा. ये जो लार्वा यहाँ बना, वो लार्वा एक लिक्विड को सिक्रीट करेगा, एंड दैट लिक्विड विल हार्डन ऑन एयर कॉन्टेक्ट. जैसे ही वो लिक्विड जो वो सिक्रीट कर रहा है, जैसे ही वो लिक्विड एयर के कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा. एंड दैट इज नोन एज कोकून. कोकून बेसिकली द लिक्विड विच इज सिक्रीटेड बाय दैट लार्वा, it changes into a protein thread. Means it changes into a thread which is made up of protein, and these thread completely covered the caterpillar. वो जो caterpillar इसको secrete कर रहा है वो उसी अपने थ्रेड में कंप्लीटली अपने आप को कवर कर लेता है, एंड देन दैट इज नोन एज कोकून. व्हाट इट इज नोन एज एट दैट टाइम? इट इज नोन एज कोकून. देन दिस कोकून, इट सिल्कवॉर्म विल डेवलप इनसाइड द कोकून. मीन्स वो जो कोकून उसने बनाया उसके अंदर पूरा का पूरा सिल्कवॉर्म क्या होगा? दैट विल डेवलप इनटू इट, एंड दिस silkworm which develop inside the cocoon, that is known as, now it will convert into moth. Then that moth come from cocoon, and again the next life cycle will be started. So this one is the life cycle of cocoon. You can understand it in the diagram. Okay, you can see here that this one is the silkworm, silk moth. It hatch eggs, convert into caterpillar,
कैटरपिलर सिक्रीट अ थ्रेड लाइक सब्सटेंस इन विच इट विल कवर इटसेल्फ. इसके अंदर ये कैटरपिलर है एंड इट डेवलप इनसाइड इट. देन this caterpillar will develop inside the cocoon, and when it completely develop, it comes out from the cocoon, and we will take this cocoon to take the thread, and the new life cycle will be started. Then the next step, the first step was of rearing of silkworm. Second step is reeling. What happened in the reeling? Cocoons are collected, दे एक्सपोज्ड टू स्टीम. उनको फिर स्टीम में डाला जाता है, एक्सपोज किया जाता है, डाला जाता है इन द सेंस उन पे स्टीम अप्लाई की जाती है, विच सेपरेट सिल्क फाइबर. एंड देन हम उसमें से क्या सेपरेट करते हैं? सिल्क फाइबर. आफ्टर दैट डाइंग, बिकॉज सिल्क फाइबर को हम वेराइटी ऑफ कलर में देखते हैं अपने आसपास. सो वो कैसे वेराइटी ऑफ कलर आए? सिल्क फाइबर्स डाइड इनटू डिफरेंट कलर्स. एंड देन स्पिनिंग and weaving. What happened in the spinning and weaving? In the spinning and weaving, silk fiber are converted into thread. उसको spun करके उसको thread में convert किया जाता है फाइबर को. Then this thread is used to make the silk cloth. So spinning and weaving. Very important note is there that China, आजकल इसका नाम आप बहुत सुन रहे होंगे और कोरोना की वजह से सुन रहे होंगे कि भाई चाइना से कोरोना आया है. बट चाइना रैंक फर्स्ट इन सिल्क प्रोडक्शन. चाइना सबसे ज्यादा सिल्क प्रोडक्शन बनाता है और उसकी फर्स्ट रैंक है सिल्क प्रोडक्शन में. एंड इंडिया, नो डाउट इंडिया भी पीछे नहीं है. इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ सिल्क. डिफरेंट, देखिए जितनी डिफरेंट वेराइटी सिल्क की है वो सारी डिफरेंट वेराइटी के सिल्क वॉर्म की वजह से है. ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर. देन अ बिग थैंक यू टू यू ऑल and goodbye. Have a nice day. Bye.